Hello friends, welcome back. So today by the time I will be uploading this video it will be Sunday evening. So this recordings and the levels which we are going to take out for Monday, that is 23rd of March. So before going ahead, let us check it out what happened on Friday. What was our marking, what we were looking out for, and what played, where the setup came, right? After this I will be uploading another video also about a small learning, that is a small setup, how a small type of a setup where you can look out for some setups in options trading. Okay, so let us move ahead. So 9:15 we opened, gap up, and then at resistance, this black line is nothing but a resistance, right? At the resistance it closed above the resistance. So I have shown the drawing also. If there is a green candle, you can look out for first target of the above resistance, first green line, right? But over here, even if I have taken up entry at this level, let me draw a this one long position. Even if I have taken a long position at this level, can you see what would be my stop loss? Since the stop loss was very big, here entry is not supposed to be taken. So did it help? Yes, it helped a lot. You can see here it did not went till the target. You got it. SL also not hitted, but it was staying at the same position for the whole day. You got it. SL got hit at 245. So Friday, as I said earlier also, that tomorrow is going to, well, on Thursday night when I uploaded the video, I said about Friday, since it is a Friday and Nifty and Sensex has got expired and we had a very big gap down. So you have to be careful on taking up the positions on Friday, because maximum on Friday there is a tendency of the market to eat up the premiums, right? So scalping trade was there, a little bit of a 10-20 points trade. If you are a good scalper and if you are able to find a good setups, and setups came because it was very slow market, and good setups also came on Friday. Okay, so let us move on to setups kahan mile, and just on a 5-minute note, I got a one setup over here, this one, and another setup was this one. Can you see the markings? Right? By this one, it was on a 5-minute. You can see a trend line breakout along with resistance break, but it was very slow and the premium was moving very slow. Okay? So that's the reason I did not trade it on Friday. So let us move ahead. I'm cleaning up this first. See, first your chart should be clean, right? And since today is Sunday, we will be discussing what was our weekly planning last week. Did it played or did it not played? What happened? Right? I'm just cleaning up the drawings and what we can expect in the coming week. So beginning of 23rd of March, I am seeing the monthly chart first. What is the monthly? Monthly is the current
running candle. Can you see? Monthly is a running candle. It has breached 20 EMA and still 50 EMA is far away. Where is 50 EMA? Let us see. 50 EMA is at 21,674. Right? This marking. 21,633. Okay. तो 50 EMA तक आ सकता है? आ सकता है. It is monthly. Monthly always takes time to react. So monthly the trend is clearly down. I am moving down to weekly. Weekly we said that there are 3 red candles, so we can expect a green candle. But did the green candle come? The answer is no. But if I shift this to the daily also there was a 3 candle. Did we get the green candle? Yes. And then when 3 green candles, obviously upside momentum थोड़ा slow हो जाता है. We got immediately a big gap down, and this gap down was purely geopolitical. Iran oil reserves got attacked, and in retaliation, Iran attacked Qatar's LNG reserves, right? So that was purely geopolitical. Yes, technical. We had 3 green candles. Bhai ho gaya kaam, and still the confirmation of trend change is not crossed, right? So upside trend ready है क्या? No. तो सिर्फ इतना है कि you just have to play little bit technical over here. As a trader, you have to trade and then come out. That's all. Even we had a discussion on the RSI also at this levels, right? Let me put up the RSI so that revision is necessary. What was the I think it's on 15 minutes we were discussing this one. Then now it has got changed. What was the RSI over here? Now you have to understand this one. We were discussing about the RSI. By 30 पे आया first, second 30 आया, third 30 half the way आया, and then again आया. So this was the rally. So when this rally came, this was the rally. Clear? We had this trend line crossing होने के बाद first trend indication of a trend change was written over here, right? If not, just go back to the older videos and then check it out. So we just played indication of the trend change, and then can you see it was not crossing 70, and when it gave this breakdown over here, complete breakdown. Can you see? And now you must be able to understand. So RSI, yes, I see RSI only when it is market is closed. So now what is the RSI saying? By still 40 पे है, mid level पे है. एक बार 30 पे आएगा तो हम long देख सकते हैं, तब तक नहीं. Sorry, 30 पे आने का chances, that is a demand zone also over here, right? So levels almost same है, just थोड़ा ऊपर नीचे होएगा. Let us complete that thing for tomorrow. So what are the levels for tomorrow? I am just writing it down. Okay. So my levels for tomorrow is 23,371 is the resistance, right? But there is a mid level. What is the mid level? This is my mid level, that is 23,190. Nifty has closed at 23,114. Can you see this? 23,114.
So if Nifty opens gap up, say about 23,190, wait for Nifty to cross 50 EMA. Can you see this? And marking this also in a blue. Okay, wait for Nifty to cross 23,254 with a green candle. थोड़ा ऊपर ले लेते हैं. Reason is that when a gap up opening is at 50 EMA tends to move little bit upside. So over here also there is a level, right? देखो यहाँ से rejected. From here also it is rejected. From here it got rejected. From here it got rejected. So once this rejection is overpowered with a green candle, right, do not take trade immediately. You have to check, is green candle formed over here? अगर gap up opening होएगा तो obviously green candle या red candle. Wait for first 15 minutes. Is it green or red? You have to check that thing. If it is green and there is a green over here, you can take up a position for this first target. This will be a second target and this will be the third target for the day. You got it? Point noted. Gap up opening, first 15 minutes candle should be green candle, right? And then if the first candle itself crosses, मतलब अगर gap up opening यहाँ पे हुआ, first candle ही green candle cross करके 50 EMA के ऊपर चले जाके बैठ गया, obviously as a trader you have to wait, because if this big green candle, in the same way the green candle is over here, your stop loss will be very big. So you have to identify the good setups to come in and with a small stop loss. ठीक है? फ्लैट ओपनिंग हुआ तो ऑब्वियसली आपको वेट करना है, एंड दिस विल बी द फर्स्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट, सॉरी, दिस विल बी द फर्स्ट सपोर्ट. 23,030 इज द फर्स्ट सपोर्ट. अगर 23,030 के नीचे गिर रहा है, से सपोज फ्लैट ओपनिंग आया and then it comes down with a red candle. Now see, now this is the point. With a red candle, wait, do not take trade immediately. क्यों trade immediately करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ? See, can you see here? There is a demand zone. Drop based rally. There is a demand zone. So let this demand gets broken by red candle. You got it? If यहाँ पे see, trade यहाँ पे नहीं है, there is no trade over here, huh? There is no trade over blue color mark करूँ, there is no trade over here. It is just आपको ये color जो है, that is an indication. I am just थोड़ा mess हो रहा है. हाँ, do not trade over here. Let these candles are going to be the confirmation candles for the next forming candles. You got it? So if 22,947 breaks, then your first support after this breaking, your first support will be 22,761. ये है ना 2 hours के कैंडल में है. 2 hours. Let me go to the 2 hours. It is very minute. Please view this video on a complete basis, तो आपको मजा आएगा.
Can you see this? So this is what I'm trying to tell you. Then this would be the midway and this would be the last level. Because since there are no candle indications in the 15 minutes, I have shifted down to 2 hours to identify, because these candles have formed in 8th of April, right? Almost 1.5 month back. 1.5 महीने पहले के कैंडल्स आपको 15 मिनट्स के चार्ट्स पे बहुत माइन्यूटली दिखेंगे. That's the reason I have shifted to 2 hours, so that you can also see the candles. You got it? This one. So I'm shifting it down to 15 minutes and refresh. Now you must be getting this. ठीक है? So if this breaks, obviously first target will be this, that is 22,761, and if a red candle forms over here also, the second target will be 22,652, right? Am I seeing downside? भाई मार्केट है, I do not know. OI चेक करेंगे, सब करेंगे, तब समझ में आएगा कि भाई is it still? Yes, technically if I see the broader view, yes, because the trend is still down. तो upside trend कब फॉर्मेशन होएगा? Once for an intraday trader आपका 50 EMA ब्रेक करेगा तब होएगा, राइट? अगर 4 hours के चार्ट में 50 EMA, let us see where the 50 EMA is. 4 hours के चार्ट में 50 EMA कहाँ पे है? Over here, that is 24,318. तो जब तक 24,318 या आइडियली 50 EMA, क्योंकि 50 EMA डेली चेंज होता है, 24,318 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपका ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन नहीं दे रहा है. दैट इज व्हाट ओवर हियर दिख रहा है. कैंडल्स का ऑटोमेटिकली अपने को समझ, तो अब तक यहाँ पे ट्रेंड चेंज होएगा तो ये 50 EMA एक बार यहाँ पे आना जरूरी हो जाता है, ऐसे past experience है. So still the trend is down, and on a daily chart also you can see red candle. weekly chart also you can see कि भाई एक डोजी जैसे है, wick पूरा ऊपर है और बेस नीचे है. You got it? So till this week is not taken out, that is 23,847, जब तक नहीं निकलता है ट्रेंड अपसाइड होने के चांसेस है नहीं है. So it is always sell on rise till a confirmation is received. But intraday के लिए 50 EMA ब्रेक किया तो obviously आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से अपसाइड के लिए. ट्राई टू ट्रेड लिटिल बिट इन द मनी, तो आपको प्रीमियम एरोडिकेशन थोड़ा कम हो जाएगा एंड स्टॉप लॉसेस भी थोड़े कम रहेंगे. गॉट इट? सो दिस इज फॉर निफ्टी मिड लेवल 23, से सपोज 23,275 और 23,190 के बीच में ओपन हुआ. भाई स्टे काम, एक लेवल को तोड़ने दो, या तो ऊपर तोड़ने दो या तो नीचे तोड़ने दो. बट फॉर डाउन साइड, till this demand zone is not broken, I am not looking to go for a down. तो 22,947 के नीचे हम डाउन साइड के लिए देखते हैं. ठीक है? So I hope Nifty levels is clear. Let us move down to the Bank Nifty. Bank Nifty भी almost same है. So this is the resistance 54,131. चेंज करना है इधर, नाउ इधर आएगा. एंड सपोर्ट इज एट 53,201. मिड लेवल फॉर बैंक निफ्टी इज दिस. If resistance gets broken, 54,668 is the first level, and then 54,982, then 55,580. राइट? बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो चलता है, तो आइडियली यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स के लिए ही देखना. डू नॉट गो फॉर इंट्राडे ट्रेड फॉर एटलीस्ट मंडे. ठीक है? सो इफ दिस इज ब्रोकन, 2 आवर्स के चार्ट में शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ पे भी.
Got it? So 15 minutes में shift होता है फटाफट. So 53,201 is going to be the support. If first support gets broken, then you can look out for 52,670 as your target, 52,113 as the second target. Right? Second target के नीचे नहीं, because this is a gap. Gap filling होके then again upside के लिए यहाँ से यहाँ पे green candle के फॉर्म आ, say after 2 or 3 days, then you can look out for another upside. आज ही बोल रहा हूँ, Wednesday Thursday को अगर ये filling up हो जाता है, if this gets filled up and if it moves over here and from here it should be green, then it is a good opportunity to go for long position. मतलब यहाँ पे green candle आएगा ना, that would be a good opportunity. This is called confirmation entry. यहाँ पे आने के बाद डिमांड जोन है, गैप फिलिंग होके ये ऊपर ही जाएगा. भाई ऊपर जाएगा, लेकिन कब जाएगा? अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, देन आई कैन लुक आउट फॉर अपसाइड. दिस इज अ कंफर्मेशन एंट्री. ठीक है, सी नाउ आई एम टीचिंग यू अ सिंपल कंसेप्ट कि भाई कंफर्मेशन एंट्री मतलब क्या? आपके लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनता है, द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो. अगर आपके लेवल के नीचे रेड कैंडल बनता है, भाई आप नीचे के लिए नेक्स्ट कैंडल पे आप, से सपोज रेड कैंडल फॉर्म होता है तो डाउन साइड के लिए. गॉट द पॉइंट? दिस इज कंफर्मेशन एंट्री, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑन मंडे, दैट इज टुमारो. आई एम लुकिंग आउट फॉर दिस टू फिल, मतलब एक बेसिंग करना चाहिए, या यहाँ से एक कंफर्मेशन देगा तब मैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए रेडी रहूँगा. इफ़ यू सी, मतलब एक सिंपल ड्राइंग भी करते हैं ट्रेंड लाइन का. कैन यू सी? तो एक ग्रीन कैंडल आएगा तो अपसाइड है ना, तब तक तो नहीं है. ठीक है. So this is something which is very tough to understand, but अभी नहीं. ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड है. तो दिस इज, ये सिर्फ रख रहा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए to understand. So if bank nifty opens below 53,777, then you have to look out for sell on rise, and if it opens above 53,777, but there should be a breach of the resistance, that is 54,131, then you can look out for going to this first target, this will be the second, and this will be the third target. ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लिए. लेट अस मूव ऑन टू सेंसेक्स लेवल्स. सेंसेक्स लेवल्स सेम थोड़ा निफ्टी जैसे ही है सेंसेक्स. सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट आउट ऑन अ वेरी बिग नोट, बट एक्चुअली आई थिंक सो दैट वाज, मैं ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको ऑन अनदर क्लास. तो दिस आर द लेवल्स फॉर सेंसेक्स, दैट इज 74,722 इज गोइंग टू बी योर मिड लेवल. अगर इसके अपसाइड है तो 75,372 क्रॉस करने के बाद ही फर्स्ट, सेकेंड, and this would be the third. I have to shift this down. ठीक है. So 73,991 is going to be your major support. If that gets broken, then 73,618, 73,323 and 72,561. As a trader, you have to be open for both the sides. मार्केट है, मार्केट ना मेरे हिसाब से चलेगा ना आपके, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम. तो मार्केट किस तरीके से जा रहा है, कौन से लेवल पे क्या रिएक्शन दे रहा है, कौन से कैंडल फॉर्मेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, उस बेसिस पे यू हैव टू टेक द ट्रेड्स. ठीक है. सो दिस इज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स. तो जो इंडेक्स लेवल्स फॉर्म कर रहे हैं वो वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं. आई एम मूविंग डाउन टू द कमोडिटीज. सो कमोडिटीज में क्या दिख रहा है? क्रूड. आई एम कमिंग डाउन टू क्रूड. Crude on a monthly, let us check it out from monthly.
चलो क्रूड इसमें नहीं है, आई एम टेकिंग आउट ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में मैंने क्रूड के मार्किंग्स हैं ऑलरेडी। इफ आई एम गोइंग फास्ट तो थोड़ा वीडियो यू कैन ड्रैग बैक साइड या आप रिपीट कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल इसमें हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस ओपन द टेक्निकल एनालिसिस चार्ट, फुल चार्ट। crude MCX. Nice, this was the very earlier marking. Monthly chart में दिखाता हूँ, that was, can you see monthly the trend was completely down right from 2023 September 2023 से लेके Feb 2026 3 years trend down। मंथली का ट्रेंड डाउन, अगर मंथली का ट्रेंड टूटता है तो क्या असर आता है, यू कैन सी ओवर हियर। सो नाउ मिक्स योर टेक्निकल विद जियोपॉलिटिकल। टेक्निकली इंडिकेशन था कि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट, बिकॉज यू गॉट अ रेसिस्टेंस। आपको कितनी बार रिस्ट्रिक्ट किया इसने, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे भी मंथली के चार्ट है ये। मंथली के चार्ट में अगर आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे इस लेवल्स पे, सॉरी, तो सोचो ना इस व्हेन इट ब्रेक्स व्हाट हैपेंस, कैन यू सी दिस? दिस इज द वेरी बिग मूवमेंट व्हिच आई हैव सीन इन क्रूड इन माय लाइफ फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द क्रूड। आई एम नॉट सेइंग कि इसके पहले भी मोमेंटम थे, यू कैन सी दैट वाज अ बिग मोमेंटम ओवर हियर आल्सो, बट वो एक ही महीने में नहीं था। यहाँ पे एक था एक महीने में, बट कूल डाउन हो गया, बट यहाँ पे कूल डाउन होने का भी कोई चांस दिखा ही नहीं रहा। यू गॉट द पॉइंट? सो क्रूड, आई एम मूविंग डाउन टू 2 hours chart. 2 hours chart is completely sideways. Can you see? completely sideways है। इस बॉक्स के लेवल्स को अगर तोड़ता है तो आपका एक सप्लाई भी तोड़ रहा है यहाँ पे। You got it? When it breaks supply तो एक मोमेंटम आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑल्सो, बिकॉज क्रूड ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। क्रूड कंप्लीटली, यू नो, क्रूड इज ऑलवेज ऑन अ डिमांड। इट इज जस्ट उनका आउटपुट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या समथिंग प्रोडक्शन अगर कम कर दिया, वॉट एवर इट इज, देन देर इज अ मोमेंटम इन क्रूड। कैन यू सी नाउ crude? It is moving in a structure, and if this structure gets broken, then obviously you can look out for a big momentum again. Physical crude तो already I think so it is trading at $115 per barrel, शायद ज़्यादा भी रह सकता है। And downside मुझे क्रूड अभी तक दिख नहीं रहा है। I am not seeing the crude downside। आएगा तो यहाँ पे आके वापस ऐसे जाएगा। सो साइडवेज होने के चांसेस, या इस ब्रेक मतलब 9400 को ब्रेक करेगा, 9483, एंड यू कैन लुक आउट फॉर 9650 लेवल्स। 9650 ब्रेक किया, ऑब्वियसली यू कैन लुक आउट फॉर 10,000 लेवल्स एंड 11,500 12,000 लेवल्स भी हम देख सकते हैं, देखेंगे ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट करेंटली कंप्लीटली बॉक्स स्ट्रक्चर में मूवमेंट है उसका। Got it? सिल्वर मेरे लेवल्स, फर्स्ट लेवल एक आया था, दैट वाज सी दिस लेवल 2016 लेवल मेरा एक आया था, 15-16 का लेवल एक था कि वहाँ पे एक अकुमुलेशन हो सकता है, एंड सेकंड अकुमुलेशन अपना 2002 के लेवल्स पे होएगा, एंड थर्ड अकुमुलेशन विल बी 1,70,000, 2,000 नहीं, सॉरी 2 lakhs, राइट। 1,70,000 के नीचे मैं सिल्वर देख नहीं रहा हूँ। आई कैन शो यू दिस दैट, हाँ ये एक स्ट्रक्चर, कैन यू सी दिस? सो आई एम सीइंग सिल्वर नॉट बिलो दिस,
ट्रेड करता है, राइट, और OPX करता है। गॉट इट? थोड़ा माइन्यूटली लेते हैं। 1,86,000 के नीचे मैं सिल्वर देख नहीं रहा हूँ। दैट वुड बी द लास्ट वन। यस, दिस इज अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट, राइट। तो एंड से सपोज कुछ लोग कंफर्मेशन एंट्रीज का सोच रहे हो, मतलब यू वांट टू लुक आउट कि भाई सिल्वर जब कंफर्म कर रहा है कि मैं अपसाइड के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, एट दैट टाइम यू कैन सी दैन दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रेंड लेवल। ठीक है, 4 आवर्स के चार्ट में थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ इसको। कैन यू सी? एकदम स्टीप ट्रेंड को मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं एक कांस्टेंट ट्रेंड जो रहता है ना, उस ट्रेंड को मैं ले रहा हूँ जो आंखों को अच्छा दिखे। सो इफ दिस क्रॉस देन ऑब्वियसली सिल्वर को हम अपसाइड के लिए देखेंगे। ये एरिया कंप्लीटली आपको अक्यूमुलेट करने का एरिया है। दिस एरिया ऑफ सिल्वर इज कंप्लीटली अक्यूमुलेशन एरिया। अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग डिप्स पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, राइट। ऑब्वियसली 186 के नीचे आएगा तो एज अ ट्रेडर बुक करना है। एज एन इन्वेस्टर यू कैन होल्ड, बिकॉज सिल्वर ऑलवेज एक मोमेंटम लेट देता है, लेकिन जब देता है तो एकदम थपा थप देता है कि नहीं? सो दीज आर द लेवल्स फॉर द सिल्वर। We discussed about crude, we discussed about silver, and now I have gold. Gold I am not a good, मतलब I do not track it on a regular basis, but as an investor, yes, gold भी थोड़ा silver जैसे ही चल रहा है। Gold I have a supply zone over here. You can, everyone can see this. I have a supply zone over here. Till the टाइम सप्लाई इज नॉट ब्रोकन, आप गोल्ड में लॉन्ग पोजीशंस देखने का नहीं फिलहाल सोच सकते हैं। डाउन साइड के लिए गोल्ड 136 का एक लेवल है, बस इस लेवल के नीचे उसको नहीं आना है। 136 120, मतलब मैंने 120 के लेवल्स में बता रहा था सबको। सो 135 के नीचे तो मैं गोल्ड नहीं देख रहा हूँ। फर्स्ट आपका रेसिस्टेंस इज सपोर्ट लेवल, सॉरी, फर्स्ट सपोर्ट लेवल इज 1,40,000। सो करेंटली 144 पे है, तो यहाँ पे भी आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और दिस एरिया, करंट दिस एरिया इज ऑब्वियसली अक्यूमुलेशन एरिया। सो गोल्ड एंड सिल्वर एवरी डिप्स यू कैन बाय। यू गॉट इट? तो सिल्वर भी यू कैन बाय एट 227 लेवल्स, अच्छे लेवल्स हैं। इवन गोल्ड इज एट अ गुड लेवल। 135 के नीचे ऑब्वियसली उसका लास्ट सपोर्ट वो तोड़ देता है, तो उसके नीचे गोल्ड विल कम टिल हियर 131 का लेवल। ठीक है, उसके नीचे नीचे के लेवल्स दे रहे, ऊपर के लेवल्स, भाई ऊपर के लेवल्स तो इट इज ऑब्वियसली इट इज अ कमोडिटी। ऊपर के लेवल्स तो हमेशा आपके लिए ओपन रहता है। कहाँ बाय करना, कहाँ अक्यूमुलेट करना एज एन इन्वेस्टर, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हुआ है। अपसाइड के लेवल्स तो भाई दिस इज गोइंग टू बी योर रेसिस्टेंस। एक बार ये रेसिस्टेंस तोड़ेगा तो क्या होएगा, अपसाइड के लिए रेडी हो गया। देन यू हैव अ सप्लाई जोन ओवर हियर, ये सप्लाई को तोड़ दिया तो वापस अपसाइड के लिए रेडी हो गया। यू गॉट इट? करंटली 144 चल रहा है, 147 149 पे फर्स्ट रेसिस्टेंस है, सेकंड रेसिस्टेंस 154 पे है। भाई गोल्ड है, 6-7% का मोमेंटम दे दिया तो हो गया आपका काम, है कि नहीं? बट थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशंस बोलो या प्रोडक्शन का जो कुछ भी है, डाउनसाइड लेवल्स इसके लिए दे रहा हूं बिकॉज मेजर ऑफ एवरी वन ऑफ अस, मेजरली वी ट्राई टू अक्यूमुलेट एंड वी वांट टू नो एट व्हाट लेवल्स अक्यूमुलेशन इज अ गुड लेवल, राइट? तो सिल्वर एंड गोल्ड पे ये एरिया का अक्यूमुलेशन इज अ गुड लेवल ऑफ एन अक्यूमुलेशन। इसके लिए नीचे के लेवल्स हमने डिस्कस किए, ऊपर के लेवल्स वो प्रॉफिट में आने के बाद ही छोड़ो, दैट इज द गुड। एज एन इन्वेस्टर मैं वही बोलूंगा, गोल्ड एंड सिल्वर में एज अ ट्रेडर यू हैव टू एनालाइज, बिकॉज
momentum is purely basis on geopoliticals. ठीक है? So we discussed about gold, silver and crude. Let us discuss about one of the stocks which is everyone's favorite stock, that is Reliance. So Reliance, I am moving down to first 1 month chart. चलो इधर ही मार्क करते हैं रिलायंस को, सो दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 मंथ चार्ट 5 EMA के नीचे है बट 20 EMA के ऊपर है, राइट? तो रिलायंस 50 EMA के नीचे जब तक नहीं है तो एवरी डिप इज अ गुड टाइम टू बाय. ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी ट्रेडिंग व्यू और बिकॉज मंथली चार्ट पे है हम, तो आई एम नॉट गोइंग मतलब आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्विंग ट्रेड्स. अपने को वीकली 1 डे एंड 4 आवर्स के चार्ट में ही देखने मिलेगा. सो 1293 इज द मेजर सपोर्ट ऑफ रिलायंस नाउ. अपसाइड के लिए, अपसाइड बाद में देखेंगे, इन्वेस्टर नीचे अकुमुलेट करने का करेंगे, है कि नहीं? सो नाउ रिलायंस कौन से मोमेंटम के बाद आपको एक बिग मोमेंटम मिलेगा? वीकली साइडवेज है कंप्लीटली, राइट? एक रैली बेस्ड रैली, मतलब वहां पे एक एंट्री भी मिली है. सो दिस एंट्री वाज अ गुड एंट्री फॉर रिलायंस. जब तक इसके नीचे नहीं है, रिलायंस अकुमुलेशन ऑन एवरी डिप इज अ गुड. ठीक है, इसके नीचे दैट इज 1225 के नीचे डाउन ट्रेंड हो जाएगा वापस तब तक. एंड अप ट्रेंड कंफर्मेशन आपको वंस इट ब्रेक्स दिस. वन 880 पकड़ते हैं, 1486 नहीं पकड़ते हैं, 1488 या 1490, दैट थोड़ा एक राउंड फिगर मिल जाएगा. 1490 के ऊपर you can look out for Reliance moving on a upside note. ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए कहाँ अकुमुलेशन आई एम नॉट सेइंग कि कहाँ अकुमुलेशन हो सकता है. यहाँ पे भी आप अकुमुलेट कर सकते हो. आपका स्टॉप लॉस विल बी 1361, इसके नीचे नहीं, बट आइडियली इस लेवल को ब्रेक करेगा 144. ये तो वापस वही लेवल है, बहुत दिनों पहले वी डिस्कस्ड अबाउट दिस लेवल 1444. इस लेवल को जब क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम मिलेगा. आई थिंक सो कौन सा, यहाँ पे था यस. तो एक मोमेंटम मिलेगा, ये मोमेंटम मिला था. Then it again slipped down, वापस 1444, again we got a momentum, वापस slip down हो गए and वापस वही levels आए हैं. That is a good sign. So 1444 is very strong holding, right? So एक stock भी हमने discuss कर लिया, commodities completely discuss किया. This video has went long for 40 minutes. I hope if you're watching it for the full 40 minutes, हैट्स ऑफ टू यू, ग्रेट. ऐसे ही पूरा वीडियो देखोगे तो ऐसे ही मजेदार आते जाएगा, लर्निंग्स मिलते जाएंगे. ठीक है, चलो सी यू टुमारो. हैव अ ग्रेट एंड प्रॉफिटेबल डे. टेक केयर, ट्रेड सेफली. सी यू सून.